everyone can join, then we'll start the class. Okay, then I'll share the screen and share the PPT, and then we'll start with the class. Okay, just we'll wait for 1 more minute maximum. Good evening, Aman. Okay, let me change my name. Okay. Yes, thank you, Saurabh sir. So yes, students, so let's start the session. Uh, hmm, yes, so let me share the screen 1 second. Hope my voice is audible to you all. If there is any issue, kindly let me know. Yes, hope the screen is visible to you all. Yes, thanks a lot for confirming. So this is what we are going to do today, that is plant mineral nutrition. See, uh, this particular class, as I understand, is for both those students who are preparing for ADO and HDO. So this is one such chapter which is common in both. Okay, and I'll be highlighting those. अगर कहीं पे कुछ ऐसा है कि specifically horticulture के लिए important है या specifically agriculture के लिए important है, मैं highlight करती रहूंगी. Otherwise जो भी मैं कंटेंट पढ़ाने वाली हूँ टुडे, एटलीस्ट टुडे, वो पूरा पूरा कॉमन है दोनों के लिए. ठीक है, विद दिस इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन सॉइल एंड प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन. नाउ बिफोर दैट एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या सिलेबस है एक्चुअली. इसमें मैंने बहुत कम वो दिया है इसमें. एज यू कैन सी हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉइल मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक्स, एज यू कैन सी हियर दीज आर दोज टॉपिक्स जो हम लोग करने वाले हैं. जैसे कि सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड इसके एसोसिएटेड कई सारे टर्मिनोलॉजीज है, लाइक योर दिस अम्यूनाइजेशन, अम्यूनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारे कई सारे टर्मिनोलॉजी से एसोसिएटेड विद सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये सारा हम लोग इसमें देख लेंगे. एंड इफ यू सी दिस इज अ सिलेबस फॉर एडीओ एंड ये सिलेबस है एचडीओ का. लेकिन आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे ऐसा मेंशन है तो ये उन्हीं के लिए है, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हमारे लिए नहीं है. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा अंडर प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, कई सारे ऐसे होते हैं कि ना दे डोंट हाईलाइट, बट अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं इवन इफ दे डोंट हाईलाइट वो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज लेट मी नो. देखिए आई हैव नो, मैं टीचिंग कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट नहीं कर रहे हैं, तो मोर देन 7 years एग्रीकल्चर टीचिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन द थिंग इज अरुणाचल प्रदेश के एग्जाम के लिए ये टीच करना थोड़ा मेरे लिए नया है. सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ जा रही हूँ और मैं नो आई एम नॉट कवरिंग एज पर द रिक्वायरमेंट, आप बिल्कुल हाईलाइट कर दीजिए, मैं इमिडिएटली उसको कवर कर लूंगी, या फिर उसको हम लोग बहुत हल्के से करके छोड़ देंगे. ओके, काइंड दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल. कहीं पे भी आपको लग रहा है कि
थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए या फिर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इन ईदर केसेस काइंडली लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। सो उसके बाद हम लोग करेंगे प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियलिटी का एक थियरी है, बेस्ड ऑन दैट देयर आर वेरियस मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वो क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस, वो सब करेंगे। अलोंग विद दैट विल आल्सो लुक एट द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज। ओके, प्लांट्स में किस तरह से अगर डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव होगा तो टॉक्सिसिटी किस तरह के सिम्टम्स के थ्रू वो दिखेंगे, all that we'll be doing in this. And after that we'll be doing the classification and types of manures and fertilizers, one of the most important topics I should say, क्योंकि जब आप खुद फील्ड लेवल पे काम करने जाओगे तो डेफिनेटली यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंड दिस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ओनली देन यू विल बी एबल टू सजेस्ट एनीथिंग टू द फार्मर। सो प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नॉट ओनली थियोरिटिकली। सो प्लीज आप थोड़ा सा इसको अच्छे से आप देख लीजिए। एंड देन प्लांट मिनरल मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, किस तरह से द मिनरल्स वुड मूव इन द सॉइल, ओके, द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल, एंड हाउ द मिनरल्स आर absorbed by the plant, and what is their movement in the plant body. Okay, 3 steps होते हैं whenever we talk about मिनरल मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, वो तीनों स्टेप्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, ये बिल्कुल बेसिकली हम लोग जो आपके बीएससी एग्री या हॉर्टी में जितना आपने पढ़ा है उतना ही करेंगे, अदरवाइज ये बहुत ही इन डेप्थ सब्जेक्ट है। ओके, वेर एवर यू आर फीलिंग लाइक यू आर हैविंग क्वेरीज, प्लीज कीप ऑन telling me. I'll be more than happy to answer your queries. One second. Yes. Okay. Now, ये हो गया हमारा, एंड बेसिकली वॉट एवर दैट what I have told you. ठीक है, now with this let me start. So before going into the chapter itself, मैं पहले I want to take you through some important steps. बिल्कुल, अब एग्रीकल्चर हो हॉर्टिकल्चर, एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स कुछ है, क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स जिनको बोलते हैं हम लोग, वो देख लेंगे। इन दैट वेयर दिस सॉइल पार्ट कम्स, वो देख लेंगे, एंड देन विल स्टार्ट द एक्चुअल सेशन। सो बिफोर दैट ये सम बेसिक डिटेल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, यू नो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कहाँ कहाँ पे किस तरह के क्रॉप्स होते हैं, एंड ऑल दैट। ये तो बेसिक डिटेल्स है, उसका एरिया, पॉपुलेशन, ऑल दिस वॉट एवर डाटा दैट आई हैव गॉट, इट इज बेस्ड ऑन द 2011 सेंसस। ओके, लेटेस्ट डाटा मुझे अभी मिला नहीं है, वो ऑलरेडी आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स टू हेल्प मी इन दैट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वंस आई गेट दैट मैं आपको वो डाटा भी दे दूंगी, वॉट एवर द लेटेस्ट डाटा दैट इज अवेलेबल, स्पेशली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड आपके हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये हम लोग आराम से कर लेंगे, अभी टाइम है हमारे एग्जाम के लिए। सो करंटली विल फोकस ऑन द बेसिक्स। अगर मैं कहीं पे भूल जाऊं तो प्लीज रिमाइंड मी आफ्टर ए मंथ और सो, ये कवर कर लेंगे, ठीक है। बिफोर दैट जो हमें इम्पोर्टेंट है, सी व्हेन वी टॉक अबाउट आपको तो पता ही होगा, बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एंड ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जूम कल्टिवेशन इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द फार्मर्स, okay, that is moving from one place to another, by clearing the forest and taking up agriculture and all that. उसमें भी कई तरह के हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन व्हाट विल डिस्कस दैट इन फार्मिंग सिस्टम्स। फार्मिंग सिस्टम्स एक्सक्लूसिवली हम लोग एक क्लास करेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स इन इंडिया, उसमें कवर करेंगे। इन दैट आई विल टेक यू थ्रू दिस जूम कल्टिवेशन इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमें एक और फार्मिंग सिस्टम करना है। सो उसमें हम लोग क्लियरली करेंगे। बेसिकली ये क्या है, लैंड क्लियरेंस एंड आफ्टर दैट टेकिंग अप एग्रीकल्चर, बेसिक यू आई थिंक यू शुड नो दिस। The state has approximately more than 500 indigenous species of medicinal and aromatic plants. ये बहुत important है, and the main crops include in Arunachal Pradesh rice, maize, millet, potato, ginger, mustard, off-season vegetables, large cardamom, and cash crops अभी sugarcane and potato are also becoming popular. Along with that, there are few endemic vegetables, बिल्कुल यही पे आते हैं, like your sweet potatoes, brinjal, ginger, chilies, pumpkin, cucumber, local cowpea, etc. Now ये हो गया हमारे basic farm, field crops.
उसके बाद ये हो गए हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स। अब फ्रूट क्रॉप्स हो गए हमारे पाइनएप्पल, एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन, लीची, पपाया, ये सब। ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम लोग करेंगे इन हॉर्टिकल्चर। ओके, एंड ये जो फील्ड क्रॉप्स है, ऑल दिस विल बी कवरिंग इन द रेगुलर एग्रीकल्चर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, यहाँ पे आई थिंक डेमो क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि whether I will be covering these crops in detail in class. See what I am going to do here, मैं आपको इन सारे क्रॉप्स के हैंडआउट्स दे दूंगी। मतलब व्हाट आर द बेसिक कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट आर टू बी परफॉर्म्ड इन ईच ऑफ दीज क्रॉप्स, क्या क्या केयर लेना पड़ेगा, व्हाट इज द वेरियस क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स एज सच दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड एट व्हाट टाइमलाइंस, वो सब मैं आपको दे दूंगी। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इन सब में जो बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, ओके, देयर इज लॉट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट वी परफॉर्म इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, वो सब हम लोग एक ही क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, एक 60 to 70 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। मैं आराम आराम से आपको पूरा समझाऊंगी। एंड वंस वी, आपको वो समझ में आ जाएगा ना, वंस वी नो दैट, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गो थ्रू दिस हैंडआउट्स। फिर आपको सिर्फ, अच्छा राइस है, ये इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस है, दिस इज हाउ इट इज सोन, दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन इज डन, दिस इज हाउ इट इज हार्वेस्टेड, बस उतना देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक लेना मतलब अगेन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। होपफुली आप जो रेगुलर एग्रीकल्चर जो भी आपने पढ़ा होगा डिग्री में, दैट यू हैव मस्ट हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, सो हम लोग फिर उसमें जाने से तो अच्छा है, विल फोकस मोर ऑन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। होप इट इज क्लियर। कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। एंड ये हो गया हमारा बेसिक्स। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। नाउ ये मुझे डाटा मिला है फ्रॉम द साइट, वन सेकेंड, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश का एक साइट है, उसी में मिला था मुझे बेसिक एग्रीकल्चर डाटा एंड अदर डाटा। एंड इसमें आप देख सकते हो, दीज आर द वेरियस, दिस इज एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट फॉर द हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स। ओके, हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स हैं, ओके, एंड द प्लेसेस ऑफ कल्टिवेशन। ठीक है, जैसे एप्पल हो गया, दीज आर दो डिस्ट्रिक्ट्स वेयर यू कैन फाइंड द कल्टिवेशन ऑफ apples a lot, like your Tawang, West Kameng, East Kameng, Lower Subansiri, etc. Pineapple का है, banana, walnut, kiwi, citrus, large cardamom, black pepper, ginger, orange. Basically ऐसा नहीं कि इन्हीं places में होगा और बाकी districts में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, but these are those places where they have high production or high area under their cultivation and high production as well, hence they have been highlighted here. Okay, एक बार आप देख लीजिए, बेसिक डाटा है ये। and these are the different kinds of bamboos, this would be important for both agriculture and horticulture, दोनों के लिए भी important रहेगा। and these are the various kinds of bamboo species that are grown in Arunachal Pradesh and their local names पूछने के चांसेस है। ठीक है, ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए, व्हेन आई टेक क्लासेस मेनी अ टाइम्स व्हाट आई डू इज, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है बट स्टिल यू नीड टू नो दैट कंटेंट, बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इट इज एन एसोसिएटेड टॉपिक विद द रेगुलर टॉपिक जो भी सिलेबस में है, डेफिनेटली आई गिव यू दैट। एंड जब भी वो ऐसे दूंगी तो मैं यार मैं ऐसे ठीक है यार, घर पर टैबुलर चलो फॉर्म में, वाले कोई टेंशन नहीं। फॉर्म में या नोट्स फॉर्म में हम्म, दूंगी एंड हाईलाइट दैट, ओके, सो दैट बच्चा से आप डर एक बाद में मर एक जाए बार वही इसको ठीक देख है। लीजिए। होप आई एम एबल टू मेक ए पॉइंट हियर। यस, मरना है क्या? सेकंड, मार कुछ दो। क्वेरी से तुम्हें कर चाहो तो दिया। मार देता हूँ। मार दो। यही यार, तो शर्म में तुम था तो मैं खुश था। यस, समझे चलो। चैट्स। ये तो करे क्या? ओके, सो अच्छा, हियर इट कम्स। ओके, आई वाज चेकिंग कहाँ पे आपके डाउट्स मुझे दिख सकते हैं। ओके, हियर कम्स द फर्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली एग्रीकल्चर क्या है एक बार वो देख लेंगे एंड देन आई विल टेक यू थ्रू द क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स। One second. Yes.
See, when we talk about agriculture, the term agriculture itself, ये Latin word से आया है. Ager means land or soil. Culture means cultivation. The typical or the technical definition, if you look, of agriculture, it is a science and art of producing crops and livestock for economic purpose and for the use of mankind. Again, mankind के through livestock के लिए भी useful रहेगा. But the highlight is it is both the science and art, okay, of producing crops and livestock basically for economic purposes, so to get something out of that in the form of economic parts. Okay, now when we talk about agriculture, there are बहुत सारे branches है, बहुत सारे subjects and all that, I mean subtopics है, branches and all that, but there are basically three major groups when it comes to agriculture. एक तो हमारा हो गया crop production group, whatever the plants that we grow, okay, that all fall under this, be it agriculture crops, be it forestry crops, be it horticulture plantations, anything, all these fall under this crop production group. ठीक है, next आता है animal management group. Now here in this case, whatever the livestock, okay, or fishes, what are the animal sort, that living organisms, that whatever that we grow, that all fall under this. जैसे कि animal husbandry, poultry भी इसी में आता है, and fisheries, उसके साथ साथ जो भी aquatic animals है, whatever that we grow, raise for again economic purpose फॉर द मैनकाइंड, वो सारे इसमें आते हैं. नाउ जब इस तरह के ग्रुप्स है तो ऑब्वियसली जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ही है, तो उसका एक बेसिक एडमिन टाइप का भी होना चाहिए, दैट विल हेल्प देम परफॉर्म द फंक्शंस प्रॉपरली. सो जो ये क्रॉप प्रोडक्शन ग्रुप है, एनिमल मैनेजमेंट ग्रुप है, इन दोनों का सही से किस तरह से पूरा करना है, मतलब किस तरह से दे हैव टू नो डू ऑल दैट will be done by the allied agriculture group. जैसे कि agriculture engineering जितने भी implements, equipment and all that is required for the farm, for the humankind to perform various steps in crop production or animal management, that would be provided by agriculture engineering. Home science में क्या है, whatever, now इतना होने के बाद whatever that produce that we get, we should understand how that has to be stored, preserved, how that has to be consumed, so that वो humankind के लिए best निकले. That all you learn in home sciences. ठीक है, ये basically एक support group है. So there are basically 7 major branches of agriculture under 3 major groups. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे agronomy basically in a very detailed manner, and horticulture in a very detailed manner as per your exams. Forestry भी पढ़ेंगे, animal husbandry भी जहाँ पे भी requirement है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, but these two are the basic or major subjects that we are going to do. ठीक है, now when we talk about, ये मैं horticulture में पढ़ाऊंगी, better we do that there. Okay, now comes one of the most important topic, that is the crop production steps, CP steps जो मैं generally बोलती हूँ. Now when we talk about crop production steps, क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स क्या है, जो भी जब भी आप किसी क्रॉप को लेना है, when anyone is going to take up a crop, they have to do or they have to perform certain operations or certain, they have to follow certain protocol sort of in the form of steps each. Okay, those steps they all fall under crop production steps. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा लैंड और सॉइल प्रिपरेशन, जैसे कि लेवलिंग हो गया, उसके बाद आपका टिलेज हो गया, लेवलिंग, ओके, टिलेज, ये सारे आपके लैंड या सॉइल प्रिपरेशन में आएगा. टिलेज में अगर प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, बेड प्रिपरेशन, ऑल दैट, ओके, अलोंग विथ क्रिएटिंग, नो उसमें क्या है, क्रिएटिंग एक favorable conditions for the seeds to germinate, all that is required you will do in the land or soil preparation. So this is what we are going to do here. After that अभी land बिल्कुल prepare हो गया, everything is done. Now they'll go for seed sowing. Now when we talk about seed sowing, there are a lot of methods of seed sowing. किस तरह का seed selection होना चाहिए, right from seed selection till sowing, and किस method में sow करना चाहिए, because कुछ ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, कुछ डायरेक्ट सोइंग होती है, राइट.
सो द लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट मेथड्स है, वो सारे हम लोग करेंगे सोइंग ऑफ सीड्स में, along with सीड टेक्नोलॉजी भी हम लोग इसमें कर लेंगे, दैट इज व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सीड्स जो प्लांट ब्रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्निकलिटी। ठीक है, सीड्स अभी सो हो गए हैं, वी हैव फॉलोड अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ सीड सोइंग एंड वी हैव डन दैट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप, जो उस क्रॉप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नाउ आफ्टर दैट वी परफॉर्म इरिगेशन प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा दे विल नॉट बी एबल, ईदर कभी कभी सीड सोइंग से पहले होता है इरिगेशन, फर्स्ट इरिगेशन, और समटाइम्स आफ्टर, वॉट एवर द बाइट में द रिक्वायरमेंट। नाउ इरिगेशन प्रैक्टिसेस में व्हाट विल डू, first thing, in all these cases, one of the basic or important aspect would be the soil, किस तरह का सॉइल है। ओके, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल द टाइप ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस आर परफॉर्म्ड, टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप द टाइप ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस आर परफॉर्म्ड, द सोइंग ऑफ सीड्स इज डन। ओके, एंड इरिगेशन प्रैक्टिसेस आर डन, क्योंकि सैंडी सॉइल से तो किस तरह से केयर लेना पड़ेगा, अगर हेवी सॉइल से क्ले रिच है तो उसमें किस तरह का केयर लेना पड़ेगा, एंड ऑल दैट दे हैव टू टेक केयर। ओके, so here soils is one very very important aspect. See, when we talk about actual agriculture itself, there are three aspects that you have to focus. One, soil, next crop, and third is its environment, the environment in which the crop is growing. Okay, क्रॉप तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन जो भी क्रॉप है उसी के बेसिस पे, उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वी सो इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉइल। ओके, सो इसी के बेसिस पे हमें बाकी सब इरिगेशन प्रैक्टिसेस वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। व्हाट आर दैट, कब सॉइल इरिगेशन देना है, व्हेन द इरिगेशन हैज टू बी गिवन, what is the methods of irrigation, there are various methods of irrigation that you have to understand. Okay, and here we also have to understand the quality of irrigation water. Okay, किस तरह का irrigation water है, and what is the care that we have to do, all that we'll be studying under this. ठीक है, next आता है fertilization, that is plant growth measure, or here plant mineral nutrition, which is what we are going to do today. What are the kind of nutrients, when they are required, in what form they are available to the plants, what are the various प्रोसेसेस, क्या क्या प्रोसेसेस है इसमें कि प्लांट जो मिनरल्स है दैट आर एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, एंड वो किस तरह से प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अगर डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा, अगर एक्सेसिव हो गया तो व्हाट आर द टॉक्सिक सिम्टम्स, ऑल दैट विल बी स्टडीइंग इन दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन, बेसिकली टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज मेन्यूर्स, फर्टिलाइजर्स कितने तरह के हैं, एंड डिफरेंट मेन्यूर्स एंड डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है न्यूट्रिशन का, ऑल दैट विल बी डूइंग हियर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थोड़ा सा लेंदी भी रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। नाउ अब क्रॉप है तो ऑब्वियसली वीड्स भी आएंगे, पेस्ट आएंगे, डिजीजेस आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, सो वील बी डूइंग all about the entomology, pathology, weeds, everything here, and how we'll be controlling them. So weeding किस तरह से करेंगे, what are the various types of weeding, and entomology में किस तरह के insects कौन से crops में आते हैं, उनके लिए ambient conditions कौन से है, diseases क्या है, all that will be studying। थोड़ा सा history भी करेंगे, थोड़ा सा हम लोग static भी करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। नाउ everything is done, we have taken proper care of the crop, and now the crop is ready for harvesting। तो हार्वेस्टिंग क्रॉप किस तरह से करेंगे, अगेन देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप, दिस इज एज पर द क्रॉप। ओके, जिस तरह का क्रॉप है उस तरह के अलग अलग हार्वेस्टिंग मेथड्स हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा, दैट विल बी डूइंग हियर। ओके, नाउ क्रॉप हार्वेस्ट हो गया है, you have to handle the post harvest operations, how you are going to store them, how you are going to preserve the produce, what are the various techniques or methods that you are going to employ so that आपका जो produce है उसका nutrition
कम नहीं होगा, एट द सेम टाइम दे हैव लिटिल बिट एनहांस शेल्फ लाइफ। देखिए अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है यहाँ पे तो डेफिनेटली वहां पे हमारा preserve shelf life कम रहेगा. So how, what are the various methods that you use to enhance or increase the shelf life? Either you are going to do it directly और कुछ value addition करके आप करेंगे, जैसे tomatoes हो गए तो directly वहाँ की we'll go for value addition and convert them into ketchup or something and will store them. उस तरह से different methods are there, various बहुत सारे methods हैं. ओके, व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर दिस ग्रेन स्टोरेज किस तरह से स्टोर करोगे आप, ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी है, अभी लेटेस्ट तो ग्रेन साइलोस करके है उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं, लॉट ऑफ मेथड्स, सो ऑल दैट विल बी स्टडीइंग हियर. ओके, नाउ ये तो हो गए हमारे क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स ना. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्रॉप प्रोडक्शन स्टेप्स, सबसे आई मीन ये स्टेप्स अगर आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट स्टेप विल टेक लैंड और सॉइल प्रिपरेशन. उसमें क्या क्या आता है आपके, एज आई सेड लेवलिंग आएगा, we'll have the tillage practices, primary tillage, secondary tillage, seed bed preparation and all that. Okay, now what are the various implements or equipment that are used in each of these steps? लेवलिंग के लिए क्या क्या है, लेटेस्ट लेजर वाले लेवलिंग के साथ we have different kinds of equipment, manual, animal drawn, tractor drawn, पावर टिलर ड्रोन, कई सारे इक्विपमेंट होंगे, दैट ऑल यू कैन डू हियर. ओके, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट, सीड बेड प्रिपरेशन डन, sowing of seeds. Now what are the various kinds of seed drillers? Manual, again उसमें कई सारे तरह के हैं, animal drawn वो भी कई तरह के हैं, mechanical वो भी कई तरह से हैं. Okay, that you can use. Irrigation, what are the various kinds of irrigation pumps? Okay, what are the various irrigation methods में भी कुछ equipment या implements use कर सकते हैं. What are they? That you'll practice here, you'll know more about that here. Fertilization, now इन दोनों में जो dusters, स्प्रेयर्स वो सब यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन हो या प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, ऑल दैट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, उनके टेक्निकलिटीज क्या है. ओके, अगर छोटा सा गार्डन में करना है तो हम किस तरह के पंप्स यूज कर सकते हैं, अगर वही ह्यूज फील्ड्स है तो किस तरह के पंप्स यूज कर सकते हैं. दैट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन the kind of pressure that they generate and with which they throw the liquid, right? So वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग क्रॉप्स. ना हार्वेस्टिंग क्रॉप्स में क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, हार्वेस्टर्स. ओके, अगेन वहां पे भी मैनुअल है, एनिमल ड्रॉन है, डिफरेंट टाइप्स, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे. एक और मैं प्लांट प्रोटेक्शन में भूल गई, वीड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडर्स, सारे इसमें हम लोग देख लेंगे. मीन अगर हर्बिसाइड्स यूज करना है तो वो, और कुछ इम्प्लीमेंट्स है, हैंड मैन्युअली करना है, एनिमल ड्रॉन है या फिर मैकेनिकली, ऑल दैट विल बी डूइंग हियर. आफ्टर दैट जो स्टोरेज ऑपरेशन से कहाँ पे किस तरह से स्टोर करना है, व्हाट मैनर, ऑल दैट. सो ये स्टेप्स अगर आप लोग बिल्कुल याद करेंगे रखेंगे ना, इट वुड बी वेरी इजी फॉर योर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. एट द सेम टाइम रेगुलर वाले इसके लिए तो यूज होगा ही है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन. ओके, बहुत बेसिक ही है, ज़्यादा टफ नहीं है. ओके, सो विद दिस लेट मी स्टार्ट. यस, अभी मैं देखूं, 1 सेकेंड. ओके, सो कहीं पे भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज कीप ऑन आस्किंग मी. ओके, यस. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेंगे. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सॉइल फर्टिलिटी. नाउ इट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स. Now, what are these essential plant nutrients? There are 17 essential plant nutrients that are very much required by the plant. Okay, now इसमें से एक भी न्यूट्रिएंट कम हो गया तो डेफिनेटली इट विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन. So only such nutrients we place under this essential plant nutrients as per the theory of essentiality. वो क्या है अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. Otherwise, if we look at the soil fertility, this is Hola, un campo, ¿eh? सर एक्चुअली, अच्छा मैंने म्यूट कर रखा है. ओके,
ठीक है सर, कहीं पे भी मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे तो आई विल डेफिनेटली म्यूट देम. मैंने अपना म्यूट करके रखा था, इसलिए आई एम नॉट एबल टू हियर देम. सो अगेन माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज आप म्यूट रखिए अपने इसको. Campur. Hilo So com curtalo com gay. yes, okay. Now when this is important during the growth period of the plants without any toxic concentration. So in simpler terms, it is the capacity of the soil to supply nutrients in the available form. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि we'll get to know that what is available form, what is the unavailable form. Okay, in the coming slides. कई बार ऐसा होता है कि the form that the plant cannot take up. Okay, उस तरह से भी होते हैं minerals in the soil, so that will not consider as fertile soils. Okay, so soil fertility is that ability of the soil to supply the essential plant nutrients in available form that the plants can utilize. दूसरा term है आपका soil productivity is the ability of the soil to produce a particular crop or sequence of crops in under a specified management system. पूरा एक agriculture year में जितने भी crops लेना है, it has that ability to produce those crops. Okay, so in अगर आप सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को अगर मैच करेंगे और यू ट्राई टू कंपेयर देम, दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम. सी व्हेन वी टॉक अबाउट द when we talk about the soil productive, all productive soils, they are certainly fertile, but all fertile soils are not productive. Why? Because देखिए, all fertile soils are not productive because अगर उसमें nutrients है, but if they are in the unavailable form, would they help the soil to produce any crop? No. So hence you can't say that all fertile soils are productive. They are not productive, but all productive soils are definitely fertile. Since they are fertile, since the nutrients are in available form, they are able to produce. Okay, simple. When we talk about soil productivity, it's a broader term used to indicate crop yields, but soil fertility, it is considered as an index of available nutrients to the plants. Hello, Okay, whatever might be the available nutrients. Yes. ma'am. What about if the soil has excess micro or macronutrients? Like if the soil has excess nitrogen, phosphorus, potassium, will it count under fertility or like? It will fall under productivity, but at the same time, they'll have some toxic symptoms. Yes. Okay, some toxicity on the plants that will reduce the yield instead of increasing the yield. So it would come under the soil fertility section, na, ma'am? Like, yes, it will fall under soil fertility section. okay, thank you, ma'am. Okay, yes. Now when we talk about soil productivity, it is interaction of all the factors. ऐसा नहीं है कि सिर्फ it is about nutrients, उसमें कई सारे factors भी आते हैं, जैसे किस तरह का variety आपने select किया है, and the kind of environment in which it is growing, the quality of irrigation water, the timings of irrigation, इस तरह से बहुत सारे factors है, वो सारे इसमें आते हैं. But when we talk about soil fertility, the main is one of the factors of crop production, and the others, there are many others, but the main is it is a factor of crop production, but not the interaction of all. It's just a factor. Now when we talk about soil productivity, it can be assessed in the field under particular climate conditions, but when we talk about soil fertility, it can be analyzed in a lab only until and unless we do the soil testing. We'll not be able to understand what kind of minerals that are there in that, and whether they are in available form, unavailable form, all that you'll be getting only through proper analysis. Now when we talk about soil productivity, it is a resultant of various factors that influence the soil management, the care and all that we are taking. But this is the soil fertility is the potential status of the soil to produce crop, that is its inherent quality, you can say. Now, soil productivity depends on location, fertility, the physical conditions, etc. But soil fertility depends upon the physical, chemical, and biological factors of the soil. That is, किस तरह के primary
प्राइमरी मटेरियल से, पेरेंट मटेरियल से सॉइल फॉर्म हुआ है, ऑल दैट विल इम्पैक्ट दिस. यहाँ पे ओनली द लोकेशन, किस लोकेशन में है, what are the fertility status, how we are going to take care of that, all that will come. So hence it is a function of soil, fertility management and climate, simple, soil productivity. और you can say ये एग्रोनॉमी में, एग्रोनॉमी का बहुत सही फिट बैठता है. Now this is a function of the available nutrients of soil fertility. Now this will fit with your soil nutrition or plant mineral nutrition. Okay. Now this is the inherent property of soil. Uska inherent property, and sorry, this is not an inherent property. So that's what I was thinking. Okay, this is not an inherent property because based on the management practices that we are performing on a particular soil type, we can change this. Okay, but this you can't change. Why? Because it all depends on the kind of parent material from which the soil has been formed. See, when we talk about soil formation, पहले तो parent material होगा, that will break down to form regolith. Okay, now this regolith will further break down to form sand, उसके बाद silt, उसके बाद clay. Okay, now this is the one that is one of the components of soil, that is mineral part. जब हम लोग soils करेंगे then you'll understand, but basically these are the mineral part of the plant, parent material. Okay, so based on, अगर ये parent material में calcium rich है, तो obviously whatever that the minerals that are plant minerals that are forming, they are rich in calcium. Agar they are rich in iron or something, these would be rich in iron. So likewise, this is dependent on the kind of parent material from which the soil is formed. Hence it is the inherent property of soil. वो कहीं और से हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं. Very very important. Whatever जहाँ पे भी मैंने यहाँ ऐसे bold में लिखा है ना, it means they are the most important points. All these. The soil productivity differs according to the variation in the climate and location, because as per the overall this thing, it will impact, that is the environment, the kind of management practices we are forming. The fertility of a certain soil is same in all kinds of climates. Okay, so these are the basic differences between soil productivity and soil fertility. Very very important. Again, ये आपके syllabus में भी clearly mentioned है. Now there is one more term that you need to understand, that is crop log system. Now this is a system that has been devised by Dr. H.F. Clements in Hawaii. Now based on the crop, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया था कि banana plantation में इन्होंने they have done this. What they have done is, based on the sampling of the leaf blades and sheets, few samples उन्होंने लेके पूरे इसमें, they have based on the sampling of that, they understood that okay, इसमें ये nutrients की कमी है और water की कमी है. Based on that only they started providing those plantations with water, nutrients, etc. Thereby उससे क्या है, with बहुत कम डिले में, with very less delay, they were able to take corrective measures properly on a timely basis. So what they used to do is, एक log system उन्होंने maintain किया है, उसमें they used to enter everything. So currently now crop log system is being used in India in sugar cane, banana and और किसमें, basically plantation crops में ये बहुत ही अच्छे से use हो रहा है. ठीक है, so they provide the means of detecting the lack of water, nutrients during various stages of growth, so that these may be corrected with minimum of delay. बहुत कम delay में they were able to take corrective measures, and everything is mentioned in that system, so that corrective measures can be taken in a much faster manner. ठीक है, next आता है हमारा important in soil mineral nutrition is the soil organic matter. Okay, आज थोड़ा सा हम लोग स्लो जा रहे हैं, बट स्लोली विल पिक अप द पेस. डोंट वरी कि मैम आज एक ही दिन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही है. ओके, यस, कमिंग टू ह्यूमस, यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस. आप पढ़े होंगे. इट्स अ कॉम्प्लेक्स रादर रेजिस्टेंट मिक्सचर, मतलब वो फिर और फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगा. इट्स अ फाइनल डेड एंड डिकेड कंप्लीटली what you'll say decomposed matter of brown or dark brown amorphous and colloidal substances modified from the original tissues or synthesized by various soil organisms.
And this is soil humus is also known as soil skin or flesh, and the formation of humus is strictly a biochemical process and a very complicated one. So whatever the organic matter in the form of dead plant and animal material, when the organisms, microorganisms, work on this organic matter, that they decompose that, okay, through various biochemical processes, and that will be converted to humus, okay, which is completely dead. Now iske baad koi decomposition nahi hoga. As a part of which, when this happens, okay, organic matter being decomposed by the microorganisms, lot of acids are created. So ये हो गया ये undecomposed fresh organic matter, okay, and this is a final one which is completely decomposed. Okay, now in between there is decomposing, okay, decomposing organic matter. Now this is the one that is rich in acids, hence this kind of decomposing organic matter jo hota hai, that is highly acidic in nature. That's why whenever we say apply farmyard manure or else manures, generally ye humus jo hai that would be manure and falls under manure. So when we talk about this manures, we say no, always apply well decomposed manure, well decomposed farmyard manure, well decomposed manure. Why? Because agar fully decomposition nahi hua hai, so that will be very rich in acids, which would be acidic in nature. So rather than helping the plants, they will act against the plant growth. So it would, so jab bhi whenever we talk about the application of organic manures, it would be, we use the term well decomposed because this is the reason. While the decomposition happens, lots of acids are released. Now, humidification of organic residues incorporating the soil depends upon their chemical composition, the soil conditions influencing the activity of the soil microorganisms. So it all depends on the environment. अगर वो बहुत ही moist area में हो रहा है decomposition, it will take lot of time. ओके अगर वही थोड़ा सा कम ड्राई कंडीशंस में है एंड एट द सेम टाइम टेम्परेचर्स भी ज़्यादा कोल्ड नहीं है, इन दैट केस डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होता है एंड it will have positive impact. So on reaching the soil, the organic residues of plant and animal origin undergo diverse changes brought about by various factors. कई सारे steps है, एक बार वो भी देख लेंगे what are the steps in that, and how the organic matter is or organic material is converted into this humus. And one more important point I forgot to add here, this organic matter as such, this is also called as revolving fund. Can anyone tell me why it's called as a revolving fund of the plants or of the yes, plants or crops? Anyone? Yes, why is it called the revolving fund? No one wants to try? See, Ma'am, might be yes. because this soil organic matter, that Hmm. like, directly don't provide the nutrients that the plant needs, but it like help the soil to gain again that like for better soil health, वापस soil health को ठीक करने help करता है, so it might be. Yes. See, plants है, ये plant है, ठीक है, sorry, ये plant है. Now they say this, all the leaves are falling on the ground, okay. Now the microorganisms are working on that, converting that this all this organic matter into humus. Now what are the nutrition that is there in the humus, again absorbed by the plants, right? Now again the same plant, it is adding the organic matter to the soil. So likewise it is revolving, कहीं पे भी wastage नहीं है, I mean it keeps on revolving among itself, hence it's called as the revolving fund also, okay. Now, when we talk about importance, the first thing humus helps is
It enhances the soil physical properties by reducing its bulk density of the soil, and by increasing the water holding capacity, its infiltration rate, its structure, everything. Now we'll be doing about the soil physical properties in a detailed manner when we do soils chapter. Okay, कई सारे properties है. Very important also, soil bulk density, soil particle density, its water holding capacity, what is it infiltration rate, soil water, soil air, everything we'll do in that soils. Otherwise, when we talk about this humus, it improves all these a lot in a positive manner that is very much useful for the plant. Okay, it serves as a nutrient source. Effective humus provides immediate supply. Okay, while stable humus acts as a long-term reservoir. Now, what does this mean? See, when we talk about the organic matter addition to the soil, ये एक continuous process है. Okay, अगर humus completely humus ही है उसमें, okay, so that would provide an immediate nutrition supply to the plants. But if we keep on adding there is vegetation there, or some animals are there in life, flora and fauna, they keep on adding organic matter, and the humus हमेशा वो प्रोवाइड करता ही रहता है प्लांट्स को. ओके, सो वेन एवर स्टेबल ह्यूमस इज देयर, इट एक्ट्स एज ए लॉन्ग टर्म रिजर्वायर, कंटिन्यूसली इसको प्रोवाइड करता ही रहता है. मतलब वो कंटिन्यूस कन्वर्जन हो रहा है, कंटिन्यूस ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, कंटिन्यूस ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, so this all depends on the kind of flora and fauna that is present in that area and the kind of environmental conditions. Okay, important. Now, it decomposes organic matter into humic substances like fulvic and humic acids, adding nutrient retention and soil fertility, because these two, they aid in all this, like reducing bulk density, increasing the water holding capacity, infiltration rate, the soil structure, etc. It holds 80 to 90% of its weight in moisture, improving soil drought resistance. Okay, it has been observed that एक scientific study भी है. When they started adding this well decomposed farmyard manure or the organic matter, they have observed that जो water retention पहले था उससे almost 20 times it has stored water in that soil. उससे पहले बिल्कुल water absorption कम हो गया था. When they added, they could notice that is the kind of water retention or water holding capacity that humus or the well decomposed manures add. So here 80 to 90% of its weight in moisture, improving soil drought resistance. Long term के लिए that would be made available to the plants again. Now, when we talk about the steps of organic matter conversion into humus, we are not going to go in a very detailed manner क्योंकि इतना अभी हमारे लिए नहीं है. एग्रीकल्चर बीएससी के लिए, एमएससी में तो होगा ही. डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सबसे पहला स्टेप क्या है? डेड प्लांट्स, लीव्स, एनिमल रिमेन्स, दे ऑल फॉल टू द ग्राउंड वेयर द abundance of these microorganisms are there. After that, the decomposition by the microorganisms start. That is the bacteria, fungi, other microbes. They break down this organic matter into simpler compounds, which again will be made available to the plants. Third step हमारा आएगा formation of simple organic compounds where the complex molecules degrade them. These microorganisms work on that and degrade them into sugars, amino acids, and organic acids. Microbial transformation into humic substances. The remaining material is further transformed into fulvic acids, humic acids, and humin, which are stable humus components. मतलब ये last stage है. Okay, after this, no more decomposition. When they are here in this stage, now this is highly acidic in nature and this is not at all suitable to be added to any field. Last step आता है हमारा organic matter conversion में humus formation, stabilization. The final humus is dark, stable, and nutrient-rich substance that improves soil fertility and its structure. Okay, now humic substances, जब based on the color itself, we can understand the kind of material that is high in it. Light yellow या yellowish brown है तो it is rich in fulvic acid. Okay, fulvic acid भी इतना useful नहीं है, that again increases the acidity in the that matter. Next आता है हमारा humic acid, which is dark brown in color. Still, it has a scope for decomposition. That final part is humin, which is gray, black, or black in color. Now, this is the most stable. Okay.
इसमें भी स्टेबिलिटी होगी, बट लेस. दिस इज अ मोस्ट स्टेबल एंड हाईली व्हाट यू विल से रिच in nutrients. Okay, so these are the 5 steps under organic matter converted into humus, and these are the colors, pigmented polymers of these humic substances. ठीक है. Now next topic जो हमारे लिए important है, there are 2 major terms that you need to understand. One is the mineralization and 2 is the immobilization and the impact of carbon nitrogen ratio on this. Okay. Now when we talk about mineralization, it is the decomposition. So जो अभी हो रहा है, that organic matter conversion into humus, that is mineralization part only. So here oxidation of the chemical compounds in organic matter happens, by which the nutrients in those compounds are released in soluble inorganic form. Simpler terms, organic nitrogen is being converted into inorganic nitrogen, thereby making it available to the plants. So this organic nitrogen is actually the unavailable form of nitrogen. Though it is present, it's not available to the plants. On the other hand, this is available to the plants. So that in जो भी unavailable nitrogen को conversion जो कर रहा है, that is mineralization. It increases the bioavailability of the nutrients that were in the decomposing organic compounds. Simple. इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब ऑपोजिट रिएक्शन है immobilization. Now here the inorganic nitrogen is being converted into organic compounds by microorganisms and or plants, whatever, and it is prevented from being accessible to the plants. It is opposite to mineralization. Now why this happens? Because of CN ratio. Now what is CN ratio? Carbon nitrogen ratio. Now can anyone tell me what is the CN ratio? What does I mean when we talk about carbon nitrogen here? The forms, if you have any idea, anyone who wants to add? In what form you'll find carbon? In what form you'll find nitrogen when we talk about organic matter? And we talk about this mineralization, immobilization. Any idea, anyone? Okay. See, when we talk about carbon here, it is all brown material, that is the dried twigs, dead animals or dried leaves, everything that is brown in color, you can say that it is rich in carbon. Okay. Nitrogen, whatever the green material that is their fresh leaves, okay, fresh some weeds or anything green, that would be rich in nitrogen. So only when this ratio is proper, okay, there's a particular ratio that is 30:1, then the decomposition would be the best. So this is the ideal carbon nitrogen ratio that should be there. Only then the organic matter decomposition would be proper. So that's the reason when we talk about composting, where we are using the this carbon rich material, nitrogen rich material in a mixture form and allow the microorganisms to convert that into compost. Okay, उसमें हमें ये ideal CN ratio maintain करना ही पड़ेगा. ठीक है, 30:1. So for every 30 parts of carbon, only 1 part of nitrogen should be there. ओके ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज द कार्बन इज कंपोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. दिस ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स present in the soil by using the nitrogen present in the organic matter. So कहाँ यूज हो रहा है आपको? नाउ यू गॉट इट. सो वॉट एवर द कार्बन कंटेंट दैट इज देयर, उस पे ये डिकम्पोजिशन काम कर रहा है. एंड हाउ the microorganisms are using the nitrogen part and then working. So ये रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है. what will happen if there is high CN ratio? Okay, the amount of carbon that is to be composed by the microorganisms is more, so more amount of nitrogen is required for the process. Now the microorganisms start using the nitrogen present in the soil environment rather than making them available to the plants. वो खुद ही use कर रहे हैं. So nitrogen is taken in the organic form, thus the process of immobilization occurs where the inorganic form is converted into organic form.
So जो already present है, that also they'll be taking up, thereby making it unavailable to the plant. So in this case, there is a deficiency of nitrogen in the immediate environment of the plants, जो natural decomposition वहाँ पे हो रहा है. So this is one scenario when high carbon nitrogen happens. Now low carbon nitrogen, what will happen? So here the parts of carbon for every part of nitrogen is less than 30. Because of this, the nitrogen available is sufficient, but carbon ही नहीं है वहाँ पे decomposition के लिए. Now the organic form of nitrogen is converted into inorganic form and thus used up by the plants. This is mineralization, but again ज़्यादा हो गया तो that will lead to toxicity. So here always this is what the ideal condition or ideal CN ratio that needs to be maintained when one is taking up artificial decomposition process or the natural decomposition process. Okay, now इसके साथ साथ कुछ और terms है that you have to understand जो आपके syllabus में है, and this is for both whatever that I have done till now. This all is important for both your ADO and HDO. So here the term, one second. Yes, aminization, the first term, aminization. It is a first step in the decomposition of organic nitrogenous compounds where the complex nitrogen containing substances like proteins, nucleic acids are broken down into simpler organic compounds such as amino acids, amines and urea. So here the first step जो हमने उसमें देखा था, breakdown of the complex organic matter to the in this case nitrogen containing substances, that is called as aminization. So here the process, proteins, nucleic acids and other nitrogenous organic compounds are broken down into by the microorganisms like bacteria and fungi into amino acids and amines. Like the organisms involved are Bacillus, Pseudomonas, Clostridium, Proteus. Here see decomposition of plant and animal residues into amino acids and simple nitrogen compounds by soil, bacteria and fungi. Again, it's a process under decomposition only. So first, the term that you have to understand is aminization. Second आता है ammonification. So here the microbial decomposition of organic nitrogen compounds such as amino acids, urea, proteins into ammonia and ammonium ions. So here organic nitrogen compounds are being converted to inorganic form. So mineralization. So here, since they are being converted into ammonia, ammonification, the process by bacteria and fungi, ammonia or ammonium ions done by Bacillus, Proteus, Pseudomonas, Clostridium. Example, the microorganisms which are involved. Urea present in animal excreta is converted into ammonia by the enzyme urease found in bacteria like Proteus and Bacillus, thereby making it available to the plants. So here you can see the urea plus moisture by the action of this Proteus with the help of enzyme urease, it's being converted into ammonia plus carbon dioxide. Okay, next term, the third term that you need to understand is nitrification. So here it is a biological oxidation of ammonia or ammonium ions into nitrites and then to nitrates which are easily absorbed by the plants. This is called as nitrification. बिल्कुल इसका उल्टा denitrification. So here steps ammonia to nitrate one step, nitrite to one step, nitrite to nitrate one step. The microorganisms involved are nitrosomonas and nitrobacter. Here in agricultural soils, fertilizers rich in ammonium compounds are converted into nitrates, making the nitrogen available to the plants. Okay, this is one step. Next is denitrification, बिल्कुल उल्टा उसका. So it is converting it into nitrous oxide and nitrogen gas, thereby escaping. So urea में सबसे बड़ी problem when we apply urea, the major problem that they face is denitrification. Okay, yes. So here in waterlogged conditions where oxygen is low, denitrifying bacteria convert nitrates to nitrates to nitrogen gas, thereby reducing the soil fertility, which apply करने के बाद भी they'll not be available to the plants. Okay, so this is about the soil fertility. Next important term that you should understand is the fourth term, and this is the fifth term. Nitrogen fixation is nothing but converting atmospheric nitrogen into ammonia by biological nitrogen fixation
और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हेन वी डू बायो फर्टिलाइजर्स और द राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जब करेंगे ना, एट दैट टाइम विल बी डूइंग दिस इन ए डिटेल्ड मैनर। और बायो फर्टिलाइजर्स, under biofertilizers we'll do one topic that is nitrogen fixation. Here only the basic terminology we are covering. Okay, so this again, when we talk about biological nitrogen fixation, there are various kinds: symbiotic or free living bacteria that uses the nitrogenase enzyme and fix the atmospheric nitrogen and convert into ammonia. Symbiotic, in symbiosis they will live, that is like in this example rhizobium, in the legume roots they take shelter, nutrition, and uh, in symbiosis process they provide this nitrogen, they do the nitrogen fixation. Free living, they are free, I mean they are not in association with any organism, they live freely in the soil and do this process like Astrobacter, Clostridium, etc. ठीक है, and this is how it is done. Nitrogen plus 8 H plus and 8 electrons, with the help of some energy they convert this nitrogen into ammonia, release H plus and 16 ADP, as because this is reduced to ADP, and then 16 pi they are released. ये इतना important नहीं है, this much is sufficient for us. Industrial nitrogen fixation में there is a process called as Haber-Bosch process that convert the atmospheric nitrogen into ammonia using high temperatures and under great pressures. Okay, physical nitrogen fixation, lightning and UV radiation. Sometimes, you know, because during that also they fix atmospheric nitrogen into nitrates in rainwater. If you have heard about this, कई बार ऐसे होता है ना, they say when there is lightning, okay, you will have these mushrooms growing in forest. विलेजेस में ये बहुत ज़्यादा होता है. वेन एवर लाइटनिंग हैपन्स, एल्डर्स दे टेंड टू गो इनटू द फॉरेस्ट, दे से दैट मशरूम्स आएंगे 2-3 days में, देन दे गो एंड दे get that. That is because of the improved nitrogen in that soil that the mushrooms, they grow naturally, they come out utilizing that. So this is because of that physical nitrogen fixation that happens during the lightning. Okay, rain season में ये बहुत होता है, into nitrates in rainwater. Okay, so this is about the nitrogen fixation. So these are some of the terms that you should understand. ये 5 basic terms है, 5A and mineralization and immobilization too. Hope it is clear. Yes, any questions? Yes, we'll stop here. यहाँ पे हम लोग stop करते हैं. Tomorrow I'll take you through the soil fertility groups, the other terms, the essential elements, all these how and what are the various nutrients, their deficiencies, their symptoms, and I have classified everything so that आपके लिए बिल्कुल easy हो पढ़ना. After this revision भी आपका बहुत आसानी से हो जाएगा. ठीक है, see, as you can see here, everything given in a very easy manner. ठीक है, विथ लॉट्स ऑफ फोटोग्राफ्स एंड टेबल्स. सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं. कई बार हम लोग कितना भी कंटेंट करवाए, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू रिवाइज. सो मैंने बहुत सारे टेबुलर फॉर्म्स में दिया है आपको कंटेंट, सो दैट आपका रिवीजन बिल्कुल आसानी से हो जाए. एंड फ्रॉम टुमारो, मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, वंस द क्लास इज ओवर, लास्ट 10 minutes विल एक्सक्लूसिवली डू सम 10 to 15 MCQs, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस हो जाए. नाउ यहाँ पे आई नीड वन हेल्प फ्रॉम यू. मुझे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिले हैं और नो रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट. सो व्हेन नो आई एम टेक नो जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, इफ यू फील दैट उसका कुछ लेवल बढ़ाना है या कम करना है, तो प्लीज लेट मी नो सो दैट अकॉर्डिंगली विल वर्क आउट. ठीक है. यस, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? Ma'am, can you please show us the slide again, where you have shown the data of that horticulture crops in Arunachal? Okay, 1 second. See, don't focus on the data. Why? Because वो अभी latest नहीं है this data. Already, as I've said, horticulture and agriculture data of Arunachal Pradesh मैंने अपने एक दोस्त को बोला है. Once I get that, I'll give you. Otherwise, यहाँ पे मेरा major focus यही है, item and the places of cultivation.
ये अभी कितना लेटेस्ट है मुझे पता नहीं, बिकॉज आई हैव ट्राई टू गेट दैट ईयर उसमें से, बट दे हैव ओनली गिवन द सोर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कब का है क्या है कुछ दे हैवंट मेंशन, एंड कई जगह पे दे हैव मेंशन 2014-15 का डाटा है, विच आई हैवंट एडेड एट ऑल हियर, क्योंकि Oh, इतना पुराना डाटा हमारे लिए एग्जाम के लिए बेकार ही रहेगा। yeah, I was thinking that, ma'am, कि ये डाटा बहुत पुराना हुआ because यस, दैट्स व्हाट yeah. लेटेस्ट डाटा के लिए मैंने बात किया है, देखते हैं कितना लेटेस्ट मिल पाएगा। Mm-hmm. Okay. यस, अदरवाइज हाउ डिड यू फाइंड द कंटेंट? आपको रेलेवेंट, आई मीन बिल्कुल लग रहा है, या फिर कुछ ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, वॉट एवर दैट आई हैव टेकन टुडे? एनीवन? कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट। कुछ और सजेशंस भी है तो, क्योंकि Ma'am, पढ़ना आप लोगों को है, सो इफ यू हैव एनी सजेशंस yeah, आप ma'am, दे सकते हो। I would like to suggest ना कि like uh, कभी कभार बीच में जैसा वर्ड्स आ जाता है like amorphous, colloidal, colloids, हम्म। तो it would be better ना like उसका एक एक सिंपल सा डेफिनेशन का साथ while explaining, जैसा if some words जो हम लोग स्टूडेंट लोग को भूल जाता है या पढ़ा था भूल जाता है, वो सब वर्ड्स जब आता है तो वो लोग का भी एक छोटा सा डेफिनेशन वगैरह लाइक फ्रॉम योर साइड। ओके, जब मैं ऐसे कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे जो आपको लग रहा है कि थोड़ा हेवी लग रहे हैं, तो आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग देम। यस मैम, बिकॉज दिस कोलॉइडल ये वाला तो बहुत हेवी टर्म है तो मैम। कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्ले कॉम्प्लेक्स जब भी रहता है ना, whenever we have the clay complex, it has all negatively charged particles, they are, these are called as colloidal complexes। ठीक है, now these negatively charged clay particles which are negatively charged, they attract positively charged particles, that is cations। ठीक है, now when these cations they come onto and latch to this colloidal complex, what happens, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आयन है, ठीक है, नाउ रूट हेयर, जब रूट हेयर से हमें रूट हेयर या फिर द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, from that we'll get H plus ions, okay, these H plus ions they take up the position of this K plus, relieving this K plus into the soil। now ये ज्यादा देर सॉइल में नहीं रह सकता है, so immediately that would be absorbed by the root hairs। so this particular entire process is called as cation exchange, and ये colloidal जो complex, this is the clay particle, this is called as colloidal particle। amorphous मतलब जो बिल्कुल पाउडरी टाइप का, मतलब थोड़ा ऐसे नहीं है कि बिल्कुल वो स्टिकी है, या फिर बिल्कुल सैंड टाइप का है, ओके, दैट इज कॉल्ड ना, वो amorphous टाइप बोलते हैं। यस, होप आई एम क्लियर। यस, होप आई एम क्लियर। यस मैम। यस, सो एनी अदर क्वेरीज, क्वेश्चंस अभी तक जो हमने किया है? ओके, सो कहीं पे भी डाउट आता है, प्लीज डाउट अगेन आई से, छोटा या बड़ा नहीं होता है, डाउट डाउट होता है, डोंट फील दैट पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे, नो नीड टू थिंक अबाउट ऑल दैट। इफ यू हैव डाउट प्लीज कीप ऑन आस्किंग मी, वहाँ आप क्लास के बीच में रैदर दैन आप अनम्यूट करके आप पूछने से तो अच्छा आप मुझे चैट बॉक्स में डालते रहिए, आई विल कीप ऑन लुकिंग इनटू दैट एंड आंसरिंग योर क्वेरीज, ओके। एंड लास्ट में 5 to 10 मिनट्स एक्सक्लूसिवली हम लोग क्वेरीज के लिए ही रखेंगे, सो अगर आपको लग रहा है तो यू कैन होल्ड ऑन टू दैट क्वेरी टिल द एंड, आप होल्ड कर सकते हो। अगर लग रहा है कि नहीं इमीडिएटली आपको चाहिए तो आप चैट बॉक्स में डाल लीजिए, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, कई बार ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता है। होप आई एम एबल टू मेक ए पॉइंट हियर। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दूंगी, एंड we'll have few MCQs also in the end, so that जो हमारा क्लास है वो सही से आपको समझ में आया है कि नहीं, that I'll also understand, okay। I don't know NS, अभी तो मेरा कुछ एग्रोनॉमी के टॉपिक्स में लेने वाली हूँ, और भी कुछ टॉपिक्स है that I'm going to take,
बाकी और भी टीचर्स है बोलेंगे. Yes, 1 second. Important terminology, 1 second. ये आपका important terminology है. Mineralization and immobilization, aminization, ammonification, nitrification, denitrification and nitrogen fixation. So don't worry, मैं ये क्लास होते ही मतलब ये जब चैप्टर ये टॉपिक हो जाएगा, I'll give you the PDF. तो आप PDF से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है. All set. So we shall meet tomorrow. अच्छा, एक और क्वेश्चन है तो आई वांट टू नो अबाउट यू. सी आई हैव डन माय बीएससी एग्रीकल्चर. ओके, उसके बाद मैंने एमबीए किया है इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट आई वर्कड इन बैंकिंग सेक्टर. एग्री बिजनेस में ही मैंने किया था, कमोडिटी बिजनेस बैंकिंग में मैंने किया था विद एचडीएफसी बैंक एंड आफ्टर दैट आई टुक ए ब्रेक. उसके बाद फिर मैंने टीचिंग में आ गई. सो सिंस मोर देन 7 years आई हैव बीन इनटू टीचिंग. एग्रीकल्चर, ईएसआई, करंट अफेयर्स सब पढ़ाती हूँ. नाबार्ड एंड एफओ एंड आरबीआई, ये मेरे स्पेशलाइज कैटेगरी से जो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाती हूँ. तो इसमें अभी आपका भी आ गया अरुणाचल प्रदेश का एडीओ एंड एचडीओ का. यस, जान लिए मेरे बारे में. देखिए, मैम विल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्लासेस भी सेम, जो कॉमन टॉपिक्स है वो कॉमन ही रहेंगे. ठीक है, दोनों के लिए. जो एक्सक्लूसिव करना है तो ऑब्वियसली वो एक्सक्लूसिव ही करेंगे. ठीक है, जितना कॉमन है वो कॉमन ही हम लोग कर लेंगे. इट वुड बी इजी, नो. यस, मैंने सबके क्वेरीज तो आंसर कर दिया है. यस, देन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. सो एक बार आई थिंक आपको वीडियो भी मिल जाना चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रहा है. स्टॉप शेयरिंग. आई हैव स्टॉप द शेयरिंग. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही अच्छे ऑडियंस है आप लोग. Thank सो you. प्लीज. यस. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, you're most welcome. So we'll meet in the next class. तो आप प्लीज कुछ और सजेशंस या कुछ है तो आप बोलते रहे. I'll keep on adding them. Thanks a lot. Take care. Bye bye. Good night. Good night, ma'am.